Record. Done. Do you want to start with your questions first, or like specific areas you want to start with first, or let me give you a brief overview first? So I would just like to know the flow actually. कैसे आप user को Okay, flow लेते हो and how do you convert that into a lead? So what is the exact flow, cool. how you're taking and what sort So of I'll platforms you're using in a certain manner? Cool. So basically, we use advertising platform, Meta preferably. We have Mm-hmm. tested Google PPC campaigns, display campaigns, Mm-hmm. but the ROI that was not that That great, good. and because we were catering to a certain demand, because if people searching for lab grown diamond, so there was a lot of competition, so the CPC CPMs were very high. So basically our current lead generation process involves Meta platforms, all inclusive: WhatsApp, Instagram, Facebook. The current flow is we are running a certain set of creatives. A certain set of creatives, I mean, there's a bunch of creatives that have really worked for us, which are testimonial creatives. uh, like, we just take a testimonial and put some buzzwords in there. People relate to those words, like for example, cost effective or high quality XYZ, and we then place a product image in below that. And then we have created multiple different versions of it. Then we have another type of creatives which are branded, like model jewelry XYZ. Those have not been so great for us in lead generation perspective, but have given us a better CPM and CTRs. But the lead quality was not there present in those particular. So to qualify the lead, uh, to improve the lead quality, we went ahead with a campaign. So we tested out multiple different audience sets. Currently, as if you know, broad audiences are working the best. We tried and tested with different lookalikes, with different custom audiences. We have tried with retargeting ads as well. We are not directing people to our website firstly. So anyone who sees the ad, we use a traffic objective in the ad campaign manager. We direct the conversation to WhatsApp. Click to WhatsApp. Okay. So the objective is to get the consumer moving from Facebook to WhatsApp with their particular query. So usually the creatives are product focused. So whenever they send us a particular message, it attaches the photo so we can Photo see with which it. product they are Hmm. looking, and we can then cater to those particular queries. Okay. Right now, the campaign we are testing is basically we are testing it in Dubai majorly. Okay. We have Okay. tested in Abu Dhabi, Sharjah, and all these areas as well. But due to our demand and where we have the stores availability, it's majorly all Dubai. So we are Entire Dubai, doing right? that Entire Dubai. entire Dubai. Entire Dubai. Age ranges, if I have to tell you precisely, we are we are right now. So we are working with broad audiences, but I can give you a breakdown of what has worked for us so far. Mm-hmm. Surprisingly, 25 to 40 has worked for us. Male audiences have also worked for us. 25 to 40, right? 25 to 45 has worked for Major us. chunk. 45 to 65 plus has worked. It's not like they haven't worked at all. I'm just talking about the majority of the Persona, conversations. basically, where the majority people lie in our category, right? Majority of people are 25 to constant. 45, male, But the female as interesting in. insight, uh, it's a 70-30 split. In some campaigns, it's a equal split also. Like for example, if the product is an engagement ring, it's an equal split. Just a second. Just give me 1 second. Sorry. Yeah. So All right. it's an equal split in some campaigns. Now talking about the uh, consumer demographics. So if I have to tell you uh, what their preferences are, so we tested out different interests that would kind of get us an idea. So for example, people who prefer high value goods, and people with a certain purchasing power. So interests that accumulate with that, let's say luxury HNIs. travel, XYZ, HNIs. HNIs. So all the interests that come in under that bucket, we have tested. Some interests that have worked for us are like basic interests like ring, jewelry, XYZ. But the best conversation inflow we have seen is coming from the broad audience, because our audiences are getting catered to uh,
through our ad copy targeting. So now if you would understand, the Meta platform has improved that we don't have to target it through our ad set level. They will optimize our ad overall in itself from our ad creative. That is why we are getting a very good cost per conversation from Meta. So if I So have to give basically, you an Advantage estimate, Plus you're talking about, right? Advantage Plus you're talking about. Advantage Plus campaigns. no, I'm talking about Advantage plus audience. The section where we don't put interest bucket and everything, it's just broad. Like we just put Correct, correct. little We bit have tested out in demographics. as well. The cost per conversation is slightly higher. Hmm. Um Also, before I forget, in the demographics, as I was telling you, 25 to 45 is the majority of the audience, but surprisingly, the lead quality of 45 plus is a bit better. There are less spam leads coming in from that particular age group. So we have tested out certain ad set within those scenarios. Uh, Now coming to your creative uh, ad set level, so we are using automatic placements Hmm. in most of our campaigns until we have to limit it to the main four, which is Instagram feed, Facebook feed, Instagram Explore, Facebook Stories, Instagram Stories, Reels. Some of the campaigns we have tested, but now the cost per conversation is varying. It started out at around 30 dirhams. We optimized it to get an average it around 10 dirhams. A current campaign that we are working on right now, which includes AI creatives, is giving us a 3.67 dirham cost per conversation, which is very good. Great. Uh, yeah, अब and 90% कम कर दिया मतलब बहुत बड़ी बात है. yeah, and we are also running another broad campaign. No, so there's a lacuna in that. So with so much volume of conversation, automatically the amount of spam conversation gets higher. Let's say Higher. if we have 500 new messages coming because of the low cost per conversation, but if we have to look it from a broader perspective, it's actually the same. So let's say we have 10-15% of people who are uninterested or who misunderstood it by somewhat way, and these are just people you're browsing XYZ. Then the intent, if I have to talk about, around 60% of people have intent to actually know more about the product. 20% of people have an intent to buy the product soon, not from us, but they are just looking for exploring options. They are looking for options actively. So Hmm. it may be getting us getting an appointment request XYZ. Okay. So this is the current range right now we are operating in. So right now, if you see, we have two campaigns live. One is giving us an average cost per conversation of around 3.67, something like that, and the other one is giving us around 8 to 12 is the range based on different ad sets. In the broad one, I think it's averaging around 10 dirhams per conversation, which is still not bad because if we look on a broader scale, the average ticket size for uh, our products is minimum accumulating to 5,000 dirhams is our average ticket size. And then there are some higher ticket purchases as well in those. So it increases the average by very high number from an ROAS perspective. Just Now to the inflow. add one more point, you have told me about the cost per conversation, which is basically cost per inquiry, if I consider it that way, right? Cost per inquiry, cost Correct. per lead, we can consider it, right? But what about the Correct. cost per sales? CAC. So cost per acquisition is a little bit tricky. I'll get to that part Okay. because I'll Sure. have to take you through the whole flow, how Sure. we are calculating that. Okay. So right now, the thing is, we are not driving the sales to our online e-com store Okay. because it's a touch and feel product and people prefer seeing it in person and then buying. I have previously tested an ad campaign for an e-commerce Okay. campaign in which we spent around 2,000 dirhams or something like that. Uh, and we gathered around like 24,000 dirhams worth of uh, Mhm. return on advertising from our online commerce store. So in that, cost per acquisition was quite good, but the other part was we were selling lower ticket. We were selling it on sale, Mhm. so the profitability was not that great as we have in this lead inflow campaign.
So what happens if someone clicks on the chat, they will go to WhatsApp. Now we have two CRMs who will respond to those queries real time within a certain period of time. They will nurture those queries based on a SOP that I've outlined. So may it be handling objection, may it be pricing, may it be getting to know more products or appointment scheduling or giving them a custom code. All these are just, I'm giving you some example. What are all the kind of queries that come in? Okay. So sometimes people will just send an image and be like, "Iska kitna?" Uh, Like there are all sorts of queries coming in. What we do is basically we try to nurture as many leads as we can and uh, move that particular conversation to our salesman through a booked appointment. So once they book an appointment, we move that conversation and we transfer it to our sales consultant. The follow-up is still taken by the CRM, but now the sales consultant will uh, cater to that particular lead. When they will visit the store, he'll try to sell them or show them whatever their query is, and we prepare ourselves beforehand for about all the products that the lead is looking for. That is why the cost per acquisition is little bit tricky. But if I have to tell you an approximate figure of based on the previous historical data, in some months we have spent, like if I have to tell you our best month, we spent around 6 to 8 thousand dirham, something in between that, because there were also engagement campaigns, and we got a back uh, verified sales figure of around 1,35,000 dirhams from all from the lead inflow, nothing including the e-commerce. This is all store walk-in. In some months, we have done 80,000 on a 2,000 dirham spend or a 3,000 dirham spend. But there were scaling challenges there because of the creatives and creative testing XYZ things and the new product testing. Uh, so the cost per acquisition is quite good if you have to look if you look from the broader perspective. From the numbers perspective, we can definitely get it down a bit more if we get into more product related queries and improve the nurturing process. But the process is working right now. The system is currently working as we are speaking. uh, what else we are using a API, WhatsApp API called Double, in which we have automated a lot of queries. We have set The chatting part is basically templates. automated. The chatting part, the sales Starting part, what part, they even do. the Hmm. follow part is automated. Catalog sending, all of these parts are also automated. I would say there's still definitely a requirement for a human to be sitting on that, because these are all, as I was telling you, the queries can be like Anything. abstract. Someone something something. So I cannot base it off a particular keyword, because people have different dialects and different like they पूरा chat ऑटोमेट नहीं differently कर in सकते उसको, पूरा ऑटोमेट नहीं कर correct. सकते. तो वो एक चैलेंज तो है, बट हमने काफी हद तक उसे स्ट्रीमलाइन कर दिया है. And then there are follow-up loops that we have set, which is a little aggressive, but we have set it for a 3, 7, 15, 30 day follow-up automation loop, in which we have asked the CRM to take follow-ups with them. Now, we recently have started the follow-up calls as well aggressively, in which we will call anyone who has engaged with us in a certain period of time. Mhm. So this is the overall flow and acquisition, how acquisition is happening right. What is the cycle closing time basically? How much days it require in average when a lead is generated, whereas the sales is done on the store? It's a range. It's a range. Minimum I'd say it takes 4 days. Okay. Sometimes we have seen, like, there are some like outliers, like they will come the same day or the next day, but it Mm-hmm. does not happen like that. People usually give us, let's say if we are sitting in between a week, they will give us a weekend date or something like that. Uh, Now then from that perspective, it's a little tricky to answer that, because it it is all depending upon the product. So if they want a custom product, we Mm-hmm. close that sale right, and then their deliveries later. If we do not have the product, they then go ahead and be like, when can you get back to me with this product XYZ? So that cycle is long. A good thing is we have seen our leads who came to us a month back also remembered us when they want to buy, and they came back to us and bought.
for Okay, a so I'm just good amount asking of you why, time. because if I want to run a remarketing campaign to those who have already inquired, you're doing follow up, right? हाँ, फॉलो अप कर रहे हो, कॉल करेक्ट। कर रहे हो। मुझको अगर वो जो बल्क ऑफ लीड्स है, 5,000 लीड एज्यूम कर लो एक हफ्ते की, मेरे को उनको अगर हम्म। रिमार्केट करना है, राइट, तो मुझको कब तक हाँ, करना सो चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। सो अभी व्हाट अप्रोच वी वर टेकिंग विद दिस वाज कि रीमार्केटिंग के कैंपेन्स वी वर डूइंग ऑन अ 30 डे का लूप, एवरेज ओके। वाला। एंड वी वर आल्सो डूइंग सम एग्रेसिव वन व्हिच वर 7 डेज। बट उसमें क्या था, उसमें सीपीएम बहुत आया था, एंड द अदर पार्ट वाज आवर वॉल्यूम वाज नॉट सो हाई। हाँ, तो वो वॉल्यूम कम है तो सीपीएम बढ़ेगा, CPM हाई नॉर्मल आ था। रहा था, तो उसमें इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, दैट इज व्हाई वी हैड टू शट इट डाउन। But the 30-day one was nice. I think retargeting campaign works the best if we have an e-commerce overall ग्लो होता है environment. तो। But I think uh, it is definitely worth a try. So that is the current cycle. But I would say let's take an average of a week to 10 days, and it can go even to a month, ठीक है, because एवरेज 2 हफ्ता पकड़ sometimes लेता it हूँ will मैं। take times. Like for example, if someone has to get their engagement ring made, they will plan for a month back. They will start seeing options, XYZ things. So then it is all based on the team, how well they nurture the lead, and नेचर। we have now got the lead, and then it's all about the nurturing process and the closing process. गॉट इट। व्हाट अबाउट दी, इफ आई टॉक अबाउट हाउ कैन आई प्लेस दिस। ठीक है, रीमार्केटिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया कि रीमार्केटिंग अब करना है हमको, बराबर है। कौन सा सीजन बोल सकते हैं हम लोग, विच ऑफ द मंथ, इन टर्म्स ऑफ अपना नॉर्मल जनवरी फरवरी के हिसाब से, कौन से मंथ्स में आपका मेजर सेल्स आता है, कौन से इस्लामिक नवंबर मंथ्स का इम्पैक्ट दिसंबर पड़ता है अपने को उसके ऊपर? सेल्स अच्छे रहते हैं, आप ये पूछ रहे हो? मतलब हाँ, कौन से मंथ्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे मेरा आरओआई आसमान छूना चाहिए, और कुछ मंथ ऐसे होंगे जहाँ मेरा आसमान नहीं मैं छुएगा, बताता मतलब हूँ चांस ही नहीं है। आपको। मैं बता देता हूँ आपको। नवंबर दिसंबर जनवरी will be the हम्म। best months. We have seen हम्म। our best performances within these months. हम्म। Uh, just after this, it starts going down. I हम्म। think this is slower season. The summers are pretty slow here because Dubai also, we have to see that it is also a tourist driven market. We also get a lot of tourist leads as well who are there for a long vacation, stuff like that. So yeah, definitely. We have delivered to a lot of leads that have taken the ring from us, and then they have taken the flight the same day. So we have ओह also नाइस। taken those. So there are also opportunities within that sector. So the end of the year to the just the beginning of the year is a good season, really good season. I think this is the slower season. I would हम्म। not say dead season completely, that no sales are happening. I think there are then certain points like lower ticket items can move for a Ramadan period or a Eid gifting period. Lower ticket items can also move for a Valentine, but we have not seen Valentine. We have tried, I think Rohan Bhai must know this better, but we have tried 3, 4 different campaigns, Umi campaign, Greater Love campaign, and this year we tried it, but we were not able to get higher ticket items being sold on Valentine's. So that volume does not, that it doesn't come within those months. Got your point, got your point. But at the same time, sales can happen. What about the September October वाला period? Because वो period India It's में good. is the best cream period. It's good. Definitely, it's good. But I think the best one is, I think न्यू ईयर के आसपास का आप न्यू ले ईयर लो, के न्यू ईयर पहले से बाद दो में, वो जोन में, महीने एक बाद में। जब लोग स्पेंडिंग पावर हाई रखते हैं, ब्लैक फ्राइडे के आसपास, जब जोन थोड़ा खर्चा करने वाला होता है, वो टाइम पे खर्चे होते हैं। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। ऑफर्स वी डू और वी डोंट डू ऑफर्स? We do offers. We have tested out different campaigns. Just a second, I'm getting a call. Let me श्योर just श्योर tell श्योर, him. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Sorry. Yeah. So we have tested offers. Uh, we also kind of do like we have done genuine offers. We have done gimmicky offers as well. So what I mean by gimmicky offers is like 20% off, 30% off वाला, वैसे वाला भी किया है, और genuine बहुत अच्छी वैल्यू वाले ऑफर्स भी किए हैं हमने। हमारे one of the best months that we did
वी वर डूइंग एन ऑफर फॉर लाइक उससे पे पहले एक वाले महीने में भी हमने ऑफर्स टेस्ट करे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है. लाइक फॉर ठीक एग्जांपल है। वी वर slightly below average price than the rest of the competitors within those months. And then I am comparing myself to like the big players like Damas and all these big boys. If you see it from a local point of view, all the options available in Dubai, we were fairly priced. ओके, ठीक है। कैन यू जस्ट नेम फ्यू कॉम्पिटिटर्स, दमास एंड मोर, कैन यू जस्ट I'll name some good ones. There's these ones you should definitely have a look at. Fergus James, कुड यू प्लीज रिपीट? Fergus, ओके। हम्म। Fergus हम्म। James. हम्म। Then there's Damas. हम्म। Then there's Kara, हम्म। Cara. हम्म। Kara is also doing, and then there's like there are smaller players within there. Let me. I have a sheet of competitors. Do you want me to Yeah, send that that would be really document to you? great. That would be really great. Perfect. Beyond that, I've I would. also listed down all of these guys based on their search volume. Okay. So I think that would definitely help you. Do we There have are like newer SEMrush brands, or something of a some tool? nice ones. Do we have Sorry, SEMrush? Do we have SEMrush to check out this we traffic do and not everything? have SEMrush. We do not have SEMrush. We use Google Keyword Planner and all Keyword planner, the other basic stuff. tools. Yeah. Yeah. We, More. we can, Mhm. so I use like these tools, we can get a greater understanding because I use it more for a SEO content perspective than more of a PPC perspective because we have tested PPC advertising. It Mhm. has given mediocre results. Mediocre results as in because people who are actively looking for lab grown diamonds, we have done some sales coming from Google advertising, but the challenging part is these leads are usually hard to convert because they understand the pricing well, so they are always looking for the best pricing out there. And there are some like outliers like that who's in a hurry. So our Google profile is really good. So we have 5 star. We are 5 star rated on our profile. 65 something reviews Okay. uh, done there. So it really gives a lasting impression. All the reviews look genuine. Uh, and we do get a lot of organic coming in from them. So Got it. for search volume, I can get a better understanding of search volume from my search console. Search console. Got the point. What I'm ranking. So right now, if you see for keywords like lab grown diamonds in Dubai, we are always on the first page. ठीक है, गॉट इट। तो आपने That's एसईओ our पे main काफी keyword काम that किया I है। wanted to rank for. एसईओ पे काफी काम SEO पे किया है। हमने काम किया. SEO काम पे किया हमने है। वो काम मेरे को किया. देखा भी है, जब मैंने क्लिक किया तो मेरे को समझ में आया कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है, मतलब काम तो हुआ है इसमें फॉर श्योर। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मेरे को जानना है कि मतलब गूगल पे अगर मैं देखूं, तो गूगल पे अगर हम लोग ब्रांड कैंपेन्स तो हम लोग को जरूरत नहीं, बिकॉज हमें का ब्रांड ऑलरेडी रैंक कर रहा है। नॉन ब्रांड कैंपेन्स अगर हम लोग ट्राई करते हैं, तो हमारे पास अगर प्रोडक्ट का फीड वगैरह जो होता है, गूगल प्रोडक्ट फीड हम्म. जिसको हम लोग बोलते हैं, कैटलॉग ऐड रन करने के लिए, शॉपिंग ऐड रन करने हम्म. के लिए, बिकॉज एट द एंड इफ यू हम्म. हैव अ शॉपिफाई सेटअप, तो हम लोग कैटलॉग निकाल सकते हैं बैकएंड से, राइट? तो कैटलॉग करेक्ट, वगैरह है करेक्ट. हमारे पास में। कैटलॉग है, हमने उसका एड्स भी टेस्ट करा था. ओके। एड्स टेस्ट करने के बाद वो थोड़ा शॉप उसका हमारा गूगल एड से रिजेक्ट हो गया था. कैटलॉग वो अलग इशू है, बट उस एड्स का एज सच मेरे को आरओआई नहीं मिला था. शॉपिफाई के थ्रू मेरे को कोई सेल्स नहीं उसमें आई। डायरेक्ट ट्रैफिक अगर नहीं अगर आया. उसको यूज करके लीड जनरेट करते हैं तो डू उसको वी हैव अ यूज करके हम पेज? लीड जनरेट कर रहे थे. डू वी हैव अ उसको पेज? यूज करके हम lead- हाँ, फॉर हमारे पास एग्जाम्पल। लीड जनरेशन हाँ। का. हाँ, हाँ, वी फॉर्म वर वाला यूजिंग. पेज। हाँ। Correct. So I had a proper funnel landing page ओके। dedicated to Google Ads only, which ओके। was hosted on a subdomain. It was not even on Shopify, it was on WordPress. वर्डप्रेस समझ गया। So made on with WP funnels, you would understand. So it had a VSL, it had a headline offer XYZ things. It had a lead form, it had all the automations going from HubSpot and all the automation coming into the CRM. वो cycle भी हमने उसको test किया. But the lead cost was very high. I was getting a good lead for around 77 dirhams. ओके। Comparatively, जहाँ पे मेरा मेटा पे उस पे स्टार्ट हो रहा है 30 dirhams पे. और दूसरी चीज है वो मेरे को प्राइस पे नहीं तोड़ रहा है. राइट। तो वो लीड
और बिकॉज वी वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के हिसाब से वी इफ वी सी, इफ वी लुकिंग एट स्केल, दैट मेड मोर सेंस टू टेक दैट स्टेप एंड बिल्ड ऑन मेटा, बिकॉज गूगल राइट। एडवर्टाइजिंग इज कॉम्पिटिटर बेस्ड, तो वहां पे स्लो, हमारा एडवर्टाइजिंग स्टेडी बजट एंड एक्सपेंसिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्लो वेरी, चलता है, या टर्टल वेरी स्टाइल है वो। एक्सपेंसिव, हम्म, वेरी बट लेकिन एक्सपेंसिव, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. हाँ। I'll if we wanted to do it correctly, we would have to have spent like 20-25,000 dirhams every month, which did not make sense at all. So गॉट इट। we did not take that Google wala route, but we did a lot of work on our Google uh, organic, which in turn उसने वो सब कवर कर लिया. हमारे को ऑर्गेनिक इतना ट्रैफिक आने लग गया था, कि और पेड़ अब का भी जरूरत आता है नहीं है। ऑर्गेनिक, के पेड़ का नहीं होता. सो if I'm not wrong, I think we have around 100 lakh, like 1 lakh plus different impressions in just in the last 3 months from organic. वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। Yeah, 3,000 to be precise, and we have around 2,000 clicks coming from organic. So दैट्स ग्रेट। that is, वो उससे एक्विजिशन मेरा हो जाता है, काफी लीड्स उससे भी आ जाती है, वो बिकॉज देयर इज ब्रांड अ कैंपेन से हो रहा है, नॉन ब्रांड से हो रहा है, इफ यू कैन स्पेसिफाई, मतलब फॉर ब्रांड organic from हॉट कीवर्ड्स हैं। that is educational content majorly, then it is transition to that. So for example, if I have to tell you the major chunk of queries that came in, so the major chunk of queries came in through a blog that I wrote. It was on how a lab grown diamonds made. ओके, हाँ हाँ हाँ, आई सॉ So दैट। it was ranking on the first page in Dubai, in the first position for a very brief period of time. So it got us a lot of impressions, a lot of clicks to the website. When people were reading through it, I used live marketing tactics that in between I was mentioning our product links, our WhatsApp consultation links. So we were getting consultations coming from there. So zero acquisition cost and a lot of good पूरा leads came in. ऑर्गेनिक एफर्ट है। And we actually verified a few purchases coming from that. So sales, because we try to get the feedback from the consumer to improve on those verticals. तो ऑर्गेनिक वहां से वर्क किया. दूसरा हमारे लिए ऑर्गेनिक किया वर्क. सो एवरमोर नाम से हमारा जो है, एवरमोर इज अ स्लाइटली ट्रिकी टर्म व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर कैंपेन, बिकॉज टेलर स्विफ्ट का एक एल्बम है एवरमोर नाम से, या एक गाना है, मेरे को नहीं पता, मतलब एल्बम या गाना है कुछ है, तो वो उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल, वो और बीच में बहुत. आएगा हमेशा। अब एवरमोर डायमंड्स पे सर्च करता है, एक और ब्रांड है यूएस बेस्ड, बट दुबई में हम उनसे ऊपर रैंक करते हैं. तो यूएई लिखो हम तो भी हम वो लोग का ही आता है। यू एवरमोर यूएई भी यूएई लिखो लिखते आप तो भी हम हमारा लोग आता आता है, है। दुबई भी लिखो आप हमारा आता है, मिडल ईस्ट या इंडिया में भी आप सर्च करोगे हमारा ही आएगा, क्योंकि राइट। हमारे इंडिया के भी काफी यूजर्स आते थे हमारी वेबसाइट पे. तो इस रीजन में तो हम एवरमोर डायमंड से सेफ है, ब्रांडेड कीवर्ड की बात करें. अब मैं अगर बात करूं लैब ग्रोन डायमंड्स जैसे नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स की, या ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स की, फॉर एग्जांपल लैब ग्रोन डायमंड्स प्राइस, या वो सारे कीवर्ड्स, तो उसमें भी हमारा अच्छा ट्रैफिक आता है. अच्छी चीज दूसरी क्या है, हमारी जो फोटोज है, प्रोडक्ट फोटोज है, वो एक एक फोटो बहुत ऑप्टिमाइज करके डाली हुई है. हर एक फोटो में ऑल टैग है, हर एक फोटो में मेटा टाइटल है, हर एक फोटो में वो है. तो हमें जो गूगल का फोटो, लेट्स से अगर किसी ने अपना गूगल लेंस यूज करके फोटो का रिंग का फोटो खींचा, तो वो जो ऑर्गेनिक से हमारा वो लेट्स से 1 कैरेट ओवल डायमंड रिंग किसी ने सर्च क्वेरी डाला, तो जब वो खोलने जाएगा, अगर वो लैब ग्रोन डायमंड भी मेंशन नहीं है, तो हमारा एक फोटो आ जाएगा उसको देखने के लिए. सो अगर उसको डिजाइन पसंद आता है तो वहां से हम थोड़ा डायमंड वाली ऑडियंस को भी कैटापुल्ट कर लेते हैं. फिर देन देयर आर एजुकेशनल ऑन आवर वेबसाइट दैट टेक्स केयर ऑफ नर्चरिंग दैट लीड थ्रू दैट प्रोसेस. गॉट। आज सच ऑर्गेनिक में वो काफी प्रोसेस काम किया है, बट पेड में उतना नहीं बोल सकते हैं। राइट। में हमने सोशल साइट पे ज्यादा काम किया गॉट है, इट। rather than पीपीसी, बिकॉज पीपीसी में वी टेस्टेड इट. पीपीसी हमने ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं करा, हमने दिवाली जैसे काफी कैंपेन्स किए, हमने उन सब में हमने उनको बजट दिया, बट वो एक्सपेक्ट था, वो वर्क करता. वो टर्टल जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही है, वो टर्टल ही है, लेकिन 25,000 दिरम्स का बजट नहीं था पर मंथ हमारा स्पेंड करने का, तो वो मेक सेंस नहीं किया हमें करने नहीं के कर लिए. रहा, वो टाइम पे करना सेंस नहीं बना, बट अब हल्का हल्का स्टार्ट करना हो तो कर सकते हैं, मतलब इन केस पॉसिबिलिटी वहाँ पे है, क्योंकि पूरा बना बनाया सेटअप है मतलब। हाँ, मतलब यू कैन पुट a bit of budget towards that. What I would advise you also is, you can also look for, because I was using this strategy के
आई वाज हमारे ब्रांडेड कीवर्ड के इतने सर्च नहीं आ रहे थे, और अगर आते भी थे तो वी वर एनीवेज रैंकिंग हायर, कि अगर कोई एवरमोर डायमंड सर्च कर रहा है तो वी वर, आई वाज ट्राइंग टू रैंक फॉर दमास लैब ग्रोन डायमंड का जो कलेक्शन है गाया, उसको कोई सर्च कर रहा है तो हम आ जाएं। तो उसमें अगर मैं आपको दो तीन आइडियाज बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सर्च करा फर्गस जेम्स लैब ग्रोन डायमंड, दमास लैब ग्रोन डायमंड, या कुछ भी लैब ग्रोन डायमंड, किसी एक ब्रांडेड उन कॉम्पिटिटर का सर्च करा, तो हमारे ऐड आ जाएगा वाई वी आर बेटर करके, वाई वी आर ठीक है। बेटर चूज अस, वो उनको लेकर जाएगा हमारे उस वाले लैंडिंग पेज पे कॉम्पिटिटर जो हमने कैंपेन वर्डप्रेस बेसिकली, पे। कॉम्पिटिटर कैंपेन हाँ, बेसिकली। कंप्यूटर कैंपेन हमने वो किया था, तो उससे भी हमें लीड्स आए थे। बट एज आई वाज टेलिंग यू कि जो लीड क्वालिटी का वो था वो डिफरेंट था। डिफरेंट था। लाइक अगर मैं कंपेयर करना चाहूंगा कैलकुलेट कैसे तो करते हैं इट हम लोग इस चीज को, कैलकुलेट कैसे करते हैं? बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरे को लीड व्हाट्सएप पे तो ट्रैकिंग नहीं पता चलता है। so for a brief period of time I was only handling the WhatsApp itself myself only. ओके। So I was hands on with the customer, so I was handling the leads, I was doing the sales part, so मेरे को वो पूरा लूप समझना था। तो मेरे को समझ में आ जाता था कि कौन से कैंपेन से क्या वर्कआउट कर रहा है, बिकॉज आई वाज एक्टिवली हैंडलिंग ऑल द क्वायरीज कमिंग इन फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिक और पेड। सो ओके। उसके उस हिसाब से मैं लीड क्वालिटी डिटरमाइन कर लेता था। अभी अब लेकिन मैं क्या अगर करता हूँ, अब ऑटोमेशन वाला सीआरएम केस है, से, सीआरएम के थ्रू करना है अब अगर अभी नहीं, अपने को। बट अब सीआरएम से तो वो सीआरएम हर चैट पे एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं। ओके। ओके, सो अभी का क्या प्रोसेस है, लेट्स से इफ आई लॉन्च अ कैंपेन, आई विल डू अ किक ऑफ कॉल विद माय सीआरएम टीम दैट दिस इज द कैंपेन वी आर गोना डू, दिस इज, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे प्राइसिंग है आपके, उनको पूरा उनको ब्रीफ दे दिया। वंस दे आर वेल versed with that, then I will be like start monitoring the newer leads that are coming from these critics and give me an input on the leads coming in. So some campaigns that we have seen the lead quality go down, some campaigns we have seen the lead quality go up. Based on that, we have made adjustments and then optimize the campaign. ओके, गॉट इट। ठीक है, बिकॉज मोटा मोटा इसमें कोई समझ और में। तरीका नहीं है, ऑटोमेशन के थ्रू डेफिनेटली आप व्हाट्सएप उसको पे तो नहीं डाल सिंपल एक सकते। टैग मार्क कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स बेटर देन के एक वो वहां पे ह्यूमन बैठ के आपका वो असेस हाँ, कर रहा है, और वो जब लेकिन है वहां पे इवेंचुअली उस ये रोल। जो होगा ना, ये हम लोग का जो चलेगा ये ऑमनी चैनल ही चलेगा, मतलब टोटल स्पेंड जो है टोटल रेवेन्यू, इसे कंपेयर करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल चैनल वाइज करने बैठोगे तो उतना एक्यूरेसी नहीं मिलेगी अपने को, राइट, टू बी वेरी करेक्ट, ऑनेस्ट। इंडिविजुअल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई वुड रैंडम से तुक्का लगा सकते इंडिविजुअल, हैं अपन। इंडिविजुअल चैनल के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो इट्स अ लिटिल ट्रिकियर ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू डिटरमिन, बिकॉज समटाइम्स एक लीड इतने हरी में रहता है या कभी कभार रहता है कि डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेट्स से अगर मुश्किल हो लीड जाता है। कॉल आया, तो rather देन मी फर्स्ट आस्किंग कि आप कहाँ से आए हैं, मैं डिटरमाइन करूँ, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेल करना। हम्म। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीनिंग? सो वो सेल करने के बाद वो उस लूप में आ जाते हैं, तो कभी टाइम मिलता है सेल्स कंसल्टेंट को, या जैसे अगर कोई ऑर्गेनिक वॉक इन हमारे, अब ये भी होने लग गया कि हमारे ऑर्गेनिक वॉक इन आ जाते हैं बिना बताए, बिना बताए। अपॉइंटमेंट लिए, गूगल पे रिव्यू देखा, वो आ गए। सो कभी कभार सेल्स, ज्यादातर सेल्स मैन को हमने यही ट्रेनिंग दिया है कि आप हमेशा एंड में पूछो कि कहाँ से आप आए या कहाँ से आपने डिस्कवर किया। तो अ लॉट ऑफ पीपल टेल कि हाँ हमने गूगल पे अभी आपका डाला था लैब ग्रोन डायमंड, तो आपका आ गया, तो हम यहाँ पर आ गए, ऐसे करके। तो वो डिटरमाइन गॉट इट, करने गॉट। के थोड़े चीजें हैं, बट उसको आपने कम्प्लीटली ऑफलाइन हंड्रेड कन्वर्जन परसेंट ट्राई किया था क्या? ऑफलाइन कन्वर्जन ट्राई किया है क्या? हमने ट्राई किया था, बट नॉट रियली वो वर्क शीट वाला जो होता ऑफ है, स्प्रेडशीट वाला, स्प्रेडशीट वाला। जो नाम वगैरह डिटेल्स डालते हैं हम लोग और फेसबुक को करेक्ट फीड करेक्ट करके बोलते हैं कि ये लोग करेक्ट हमारे स्टोर करेक्ट पे करेक्ट विजिट किए करेक्ट थे। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। वो नहीं चला हम लोग के वो लिए, मतलब वो वर्कआउट नहीं किया है। इट डिड नॉट उतना वर्क, एक्यूरेट नहीं इट आया। वाज नॉट सस्टेनिंग मी, इट वाज इट, बिकॉज़ माय ऑडियंस वाज ऑल ओवर द प्लेस, फर्स्टली कि ओके। टूरिस्ट डेमोग्राफिक है, इंडियन females in aged 50 plus. Then हम्म। there is young couple getting engaged. Then there is Arab ladies. Then there is male. So it was all over the place. So the algorithm was finding it difficult based on my that audience. Something that worked for me was I created a lookalike audience. There's a tool, if you know, called Lead Enforce. Have you used it? नो ना, So नॉट Lead यूज्ड, बट Enforce, नो, आई डोंट इट। हाँ। हाँ, सो लीड इन्फोर्स के थ्रू हमने क्या करा, व्राई ऑल दीज बिग लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड्स ऑफ ऑफ द वेस्ट, उसका कस्टम ऑडियंस क्रिएट करा, उसका लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करा, फिर हमने वो डाला। मैंने जो कस्टम ऑडियंस अपना
क्योंकि हमारे पास कस्टमर ऑडियंस का इतना डेटा भी नहीं था। अब हमारे जो नई लीड्स आई है, मैंने उसका कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का ट्राई किया और उसका कैंपेन किया, तो स्टिल उसमें सीपीएम हाई था, बट कन्वर्जेशन आ रहे थे, बट द कॉस्ट पर कन्वर्जेशन वेंट हाई। So I was trying to give it a few days to see it, but it did not make sense to scale that campaign गॉट इट। from a time to profitability ratio. गॉट योर पॉइंट। ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया। हमारे पास सेल्स का डेटा कितना पड़ा होगा अभी, अगर सीआरएम में देखना है, आपके सीआरएम पास चेक करना है, तो सेल्स का डेटा हमारे पास स्टार्ट से लेकर अभी तक का कितना पड़ा होगा? मेरे पास ऑनलाइन का डेटा पड़ा है, सेल्स का, ऑनलाइन लेकिन के नॉट जितने। लीड्स नहीं, सेल्स। हाँ, सेल्स। हाँ, तो कितना होगा डेटा मतलब हमारे मेरे पास? को कंज्यूमर का, हाँ, ट्रैक है हमारे पास, क्योंकि सो अब उसमें ये भी है, फॉर द लास्ट कपल मंथ्स का डेटा हमारे पास। एक्चुअल जो स्टोर वाले बिल्स होते हैं उसमें से हमें ट्रैक करके वो करना होता है, विच इज द सेल्स कंसल्टेंट। बट आई हैव, लेट्स से, अ डिसेंट बिट ऑफ डेटा। 1000 तक का होगा? फॉर एग्जाम्पल, सो नहीं 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 नहीं, 1000 तक का नहीं होगा। 1000 पर, वी आई डोंट थिंक वी हैव सोल्ड 1000 पीसेज जस्ट थ्रू ऑनलाइन। ओके, मतलब ऑफलाइन भी चलेगा, मतलब दुकान पे अगर आया है बंदा और आने के बाद अगर। दुकान का मतलब डेटा वैसे आपको मिल जाएगा, अगर आपको कस्टमर ऑडियंसेस क्रिएट करना है, हाँ, आपको मुझे डेटा सेल्स का, रिटेल मुझे स्टोर का कस्टमर भी मिल का जाएगा। लुक अलाइक क्रिएट करना है अगर इन केस, तो हाँ, कस्टमर का लुक डेटा अलाइक चाहिए क्रिएट मेरे कर, को, हाँ। वो मिल जाएगा। उसमें थोड़े से चैलेंजेस हैं, वो थोड़ा अकाउंट का ईआरपी के थोड़े चैलेंजेस हैं, बट आई थिंक वो अब हो गया रिजॉल्व, तो वो मिल जाएगा। हाँ, तो वो डेटा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो डेटा के बेस पे जो लुक अलाइक बनेगा ना, हमारा एंड कस्टमर का लुक अलाइक बनेगा ना, ज्यादा इफेक्टिव मैंने रहेगा। बनाया है। मैंने एक्चुअली सिरोया का हमारे पास बहुत अच्छा डेटाबेस था, डायमंड कस्टमर्स का। ओके। मैंने लुक अलाइक ऑडियंस भी, मैंने कस्टमर ऑडियंस का लुक अलाइक भी बनाया है। मैंने हाँ टॉप 10% तक मैं उसको खींच के लेकर गया था। 1% होता है ना, टॉप 1%, हाँ हाँ। 2%, 3%। मैंने हम्म, 10 उसके डिफरेंट ऑडियंस सेट्स भी बनाए थे। अ, उसका कैंपेन का डेटा वाज गुड, मतलब परफॉर्मेंस वाज गुड। द ओनली पार्ट वाज के इट वाज मिक्स डेटा, अ लॉट ऑफ मैपिंग नहीं हुई थी सही से। तो इट वाज आल्सो showing her ads to a lot of people who were looking for a much cheaper प्रोडक्ट। सो जो कॉस्ट, मतलब जो ऑडियंस हम एचएनआईज को टारगेट करने वाले थे, वो एड्स वहां नहीं पहुंची थी। एक्चुअली लोग तब वो इंक्वायर कर ऑप्शन रहे थे। नहीं था, बट अब ऑप्शन क्या है, अब हम लुक अलाइक के नीचे इंटरेस्ट भर सकते हैं। वैल्यू। तो अब वो डबल डबल ऑप्शन आ गया है, लुक अलाइक ऊपर रहेगा, नीचे करेक्ट इंटरेस्ट करेक्ट भर करेक्ट देंगे, तो नैरो हो जाएगा करेक्ट वो। करेक्ट, रिसेंटली टोल्ड, वी करेक्ट। कैन डू दैट। तो अभी हम लोग वो ट्राई कर सकते हो, करना है तो। ठीक है, गॉट द पॉइंट। एक्चुअली मीटिंग खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, हम लोग को न्यू न्यू मीटिंग करना पड़ेगा। इसका 1 आवर का टाइमिंग होता है ना? हाँ, यू कैन सेंड मी अ न्यू लिंक, आई विल हाँ, ज्वाइन। इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, मैं पहले सेव कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग को।